For the floating diyas, I'm using this glass and adding a plant, and then we'll add some water. Then I'm adding some glitters over it and stir it. Now for diya, I'm using this plastic sheet. आप कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं, बस उसका जो थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, so that it can easily float on the water. Now इस प्लास्टिक शीट से मैं कुछ सर्कल्स कट आउट करूँगी like this, और इसके बीच में एक छोटा सा होल करूँगी. And it will look like this. Don't worry about the shape. Now take some cotton and make some tiny batis out of it and put it into the hole we made like this. Now add 2 to 3 drops of oil and keep this tiny bati on it, and we are done. Our first diya is ready and it looks so beautiful. For our second diya, I'm again using a glass and adding these stars I have and adding glitters to it. And पहले की तरह मैं इसमें पानी ऐड करूँगी. ये कुछ शेल्स हैं जो मैं ऐड करूँगी इसमें. अब पहले की तरह मैं एक प्लास्टिक शीट को सर्कल शेप में कट करूँगी और उसके बीच में एक छोटा सा होल करूँगी. होल करने के बाद मैं एक कॉटन से एक छोटी सी बाती बनाऊँगी और उसको उस होल में डालूँगी. इस तरह से. इस दिए को मैं थोड़ा कलरफुल बनाऊंगी, सो आई एम एडिंग सम कलर इनटू इट. अब मैं पहले की तरह कुछ ऑयल के ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के ऊपर डालूंगी और उसमें जो मैंने बाती बनाई थी उसे ऐड करूंगी. एंड आवर सेकंड कलरफुल दिया इज ऑल्सो रेडी. For this diya, I'm using this broken jhumka of mine and adding glitters to it. Then we'll add some water. And now I'm adding oil and adding bati to it. And we are done. Now for this, I'm using this flowers, adding some glitters and these beads to it. Adding glitters, adding oil and bati. And we are done. For the last one, मैं ये बाउल यूज़ कर रही हूँ. उसमें मैं ये शेल ऐड करूँगी, some beads, a flower, and we'll adjust it. And again the same process, adding water, adding glitters, now adding oil, now we will add the batis and light them up, and we are done. Thank you for watching guys, and hope you like it, and wish you all a very happy Diwali.